Now we are discussing a parallel force F that is being applied to the upper plate while the lower plate is held fixed. After the initial transients, it is observed that the upper plate moves continuously under the influence of this force F. तो हम इस पिक्चर में ही डिस्कस कर रहे थे कि जिस वक्त ये फोर्स अप्लाई होती है और राइट साइड को यू कैन सी द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन अ वे दैट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द अपर प्लेट द लोअर प्लेट इज हेल्ड फिक्स्ड. तो क्या हो रहा है कि एज इट स्टार्ट्स मूविंग तो फ्लूइड में ड्यू टू विस्कोसिटी राइट एट द बॉटम आप देखिए u the velocity component u that is given in the x direction उसकी वैल्यू 0 है. The fluid is attached to the rigid plate जो solid है और खुद मूव नहीं कर रही तो वहां उसकी वैल्यू 0 है. जबकि अगर हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे the velocity in the x direction that is u component slightly increases and it is shown by arrows, and as it goes upwards right to the top, right to the place where the upper plate is moving, and then the fluid is also moving with the same velocity with which the plate is moving. The velocity of the upper plate becomes equal to the x component of the fluid. So that is why it is shown u is equal to v. y direction में जो fluid की जो motion है वो that you can see is also represented. ये एक angular motion भी उनकी दिखाई गई है that there is a change of a small angle d beta. So velocity profile is very much represented by u of y, which is depending on y, because as y changes we have seen the value of u is also changing. So u is equal to y over l into v. तो ये एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन है और एक रिफ्लेक्शन जस्ट आपको दिखाने के लिए या बताने के लिए कि व्हेन द फ्लो बिटवीन टू प्लेट्स अगर कंसिडर करना है और अपर प्लेट को मूव किया जाए नीचे रखा जाए तो हाउ द फ्लूइड बिहेव्स. एक टिपिकल एग्जांपल ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस dA. The fluid in contact with the upper plate sticks to the plate, यानी उसके साथ अटैच है और वो मूव नहीं करती. So it has the same velocity that the upper plate is having, and it moves with it at the same velocity, and the shear stress tau acting on this fluid layer is given by tau is equal to force over area. So the shear stress is normally denoted by tau is equal to force over force per unit area, where is the contact area between the plate and the fluid, और F इसके ऊपर हम force apply कर रहे हैं. So this ratio is called shear stress. Note that the layer deforms continuously under the influence of the shear stress. तो अगर आप पिक्चर को भी दोबारा जहन में लाएं तो आप ये गौर करेंगे कि वो जब अपर प्लेट मूव कर रही है तो साथ साथ जो लेयर है फ्लूइड की वो भी मूव कर रही है, तो डिफॉर्म हो रही है. That's why it is deforming. The fluid in contact with the lower plate assumes the velocity of the lower plate. So lower plate की तो velocity 0 है, तो वो भी तो इसलिए fluid की property वो भी 0 है, and we call it as no slip condition. No slip condition means that the fluid cannot slip, cannot move at the point of contact between the two things. In steady laminar flow, the fluid velocity between the plate varies linearly and between 0 and v, and thus the velocity profile and the velocity gradient are given as
as I've said earlier, U is equal to Y over L into V, or and at the same time, or for if it is a small movement, then du by dy, which will describe the rate of change of U with respect to Y, and it can be described as the ratio of V over L, where Y is the vertical distance from the lower plate. हमने ये आपको उसमें पिक्चर में भी दिखाया, तो उसको हर वक्त ध्यान रखिए. तो ये सिर्फ एक बताने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया, लेकिन हम जिस वक्त नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन्हीं पैरामीटर्स के साथ, इन्हीं कंडीशंस के साथ, तो उस वक्त इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे और डिस्कशन करेंगे.